भाई लोग ये नज़ारा देखो यार, मर जाएगा आदमी देख कर। ये तो साला क्या नज़ारा है। तो दोस्तों अभी हॉस्टल के बाहर निकल गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। कुछ देखता हूँ, कुछ अच्छा वाला मिले तो उसके बाद मैं जाऊँगा केएल टावर के लिए। तो चलिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. तो अभी मैंने KFC से थोड़ा नाश्ता कर लिया है, जो मुझे 11 रिंगिट में पड़ा। और अभी मैं जा रहा हूँ केएल टावर के लिए। उसके पहले मैं हॉस्टल जाऊँगा। मैंने एक लॉक ख़रीदा है जो लॉकर को लगाना था। और केएल टावर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो दिख रहा है। केएल टावर दुनिया का 7th लार्जेस्ट कम्युनिकेशन टावर है और इसकी जो हाइट है 421 मीटर। तो अभी धीरे धीरे चलते हैं वहीं पे। मैंने ग्रैब बाइक बुलाया है और निकलते हैं वहीं पे। तो चलिए दोस्तों। Hey. Yeah. Oh, you reach already? I was standing Because here. I tried to look at the hotel, don't have a hotel near. Hotel is here, this one. Oh, this one. Yeah. I reached here 2-3 minutes ago. I go see. Pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the bands, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Ready or not, I be pulling up. Remember they said I'm not good enough. I took all the energy, turned it to greatness. Now look at my life, man, it's looking amazing. I'm ready for anything, anyone. I've been so ready for everything I become. When I was stuck, I had no other option. Believed in myself when the shit wasn't popping. I got it like that. Who you know got it like that? Who you know getting degrees and they rapping like they got diplomas in rap? Man, You go on the observation, yeah? Yes. Not to the highway. Okay. What is the fare for this? This one's Skyder and Skybox, additional 50 ringgit per person. Additional 50 ringgit. Yeah. With this. Yeah. Okay, give me. know that I get it done.
In the Benz, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Pulling up, shut it down when I'm pulling up. Come around when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the Benz, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Pull up, I get what I want. I need a million ones. I need a couple of states to put all the haters back into their place. Now bringing the bass. Ayy, ready for the big league. Never gonna miss me when I'm on the TV. I'm the MVP. Whenever they hear me kill it, they be coming at me, but I hit them with a pivot. I've been ready for the shit. Never gonna quit. Pull up and I'm never gonna miss. Everybody want it, but I know I gotta get it. I've been dedicated to a life I know I gotta live. Ayy, I feel it coming. I settle for nothing. I know what I need. तो भाई लोग क्या नज़ारा है, मैं दिखाता हूँ यार, मज़ा आ गया एकदम। 421 मीटर के ऊपर और नज़ारा देख के तो साला पागल हो गया आदमी। आप लोग भी एंजॉय करो। Show me you're worth it. That body is perfect, girl. I'm living so dangerous. You wanna taste this life? I've been drinking all night. Don't know where I've been. All I know is I'm with you. तो दोस्तों अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है स्काई डेक 2। यहाँ पे 2 डेक है, एक ऑब्जर्वेशन डेक है और एक स्काई डेक है। तो स्काई डेक के जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ स्काई डेक पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी 2 डेक है, एक स्काई डेक 1 और एक स्काई डेक 2। तो मैं अभी स्काई डेक 1 पे हूँ, लेकिन यहाँ से पेट्रोनस टावर नहीं दिखेगा और इसकी फ़ीस मैंने एडिशनल 50 रिंगिट दे के लिया है। आपने स्क्रीन पे देख लिया है कि कितनी फ़ीस थी। और जो मैंने ऑब्जर्वेशन डेक की टिकट लिया था वो ऑनलाइन ही थी। तो अभी भैया नज़ारा तो देखो यार, मर जाओगे एकदम। Gotta make some changes, but I love misbehaving when I'm with you. I gotta make some changes, but I love misbehaving. भाई लोग ये नज़ारा देखो यार, मर जाएगा आदमी देख कर। ये तो साला का नज़ारा है, 300 मीटर के ऊपर। ये पीछे पेट्रोनस टावर। मैंने जो टिकट लिया था वो ऑब्जर्वेशन डेक का लिया था, जो मुझे 20 रिंगिट में पड़ी थी। लेकिन उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्काई डेक का भी टिकट ले लो, जो मुझे भी ऐड ऑन करके 50 रिंगिट में मिली थी। भाई मतलब मज़ा आ गया यार, क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। यहाँ से अगर जंप मारने को मिल जाता तो एकदम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो जाता था। मैं सजेस्ट करूँगा आप जब मलेशिया आओ तो ये केएल टावर ज़रूर आइए। I gotta make some changes, but I love misbehaving when I'm with you. Slow it down till the morning light. Girl, I love this feeling. It just feels so right. भाई लोग व्यू एंजॉय करो और यहीं पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। ये पहला व्लॉग है, मलेशिया का पहला एपिसोड है। तो होपफुली अभी आज के लिए इतना ही। कल जाऊंगा बटू केव्स और फिर सोचता हूँ जिंटिंग आइलैंड जाने का। और कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट करके। और प्लीज़ शेयर वीडियो अपने फ्रेंड्स को। और अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा मैं आप लोगों के लिए। तो आप ये वाला पीछे वाला व्यू केएल टावर का एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। थक भी गया हूँ, अभी जाके सोता हूँ। अभी जाके डायरेक्ट कल ही उठूँगा मैं, और खाना भी खा लिया है अभी फ़िलहाल। तो थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।